Hello and welcome. In this lecture series, this is the new lecture on modernism and postmodernism. Friends, we have completed structuralism and post-structuralism, and today this lecture will be dedicated to modernism and postmodernism. Okay, just first of all, note down this point or just understand this point that this modernism or postmodernism is not so much important for your examination purpose. ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से ये जो दोनों मूवमेंट्स हैं मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्न इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट. ओके, that's why we'll discuss these two movements in very short video, and we'll cover in this video only. So first of all, we should understand what modernism and postmodernism is. So modernism or postmodernism क्या है? Actually, both are the movements especially flourished in the 20th century in art, particular in general form, and especially particularly in literature. Means we can say that modernism and postmodernism are the movements in arts in general and in literature in particular. Why? These two movements flourished in art and started, and thereafter being literature a movement, sorry, a part of art. ठीक है, लिटरेचर जो है वो आर्ट का पार्ट है, एंड सो विच मूवमेंट स्टार्टेड इन art, it was also influenced literature too. तो जो मूवमेंट आर्ट में स्टार्ट हुआ उसने लिटरेचर को भी प्रभावित किया, इसीलिए हम लोग कहते हैं दैट इज मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म आर द मूवमेंट्स दैट वर generally in art and particularly in literature. We'll be going to discuss. Okay, so before moving to modernism and postmodernism, or before understanding modernism and postmodernism, we must understand that what modern is, because the root cause uh, in modernism and postmodernism is the word modern. What does it mean? The word modern means that what is new, what is current, means a point of time between what has been uh, past and what will be in future, means a point of time which is present. This is modern. That's why we call Chaucer the first modern poet. We call each and every period, each and every writer and critic modern in itself. ठीक है, हर एक क्रिटिक को, हर एक राइटर को, हर एक एज को हम लोग मॉडर्न कह लेते हैं. ठीक है, we call the Chaucerian age the first modern age of English literature. Why? Because these were current at that time. But why these two movements and these two words, modernism and postmodernism, is particularly associated with the 20th century? ठीक है, क्यों ये स्पेशली एंड पर्टिकुलरली इनका एसोसिएशन 20th सेंचुरी से होता है? क्यों हम लोग पर्टिकुलरली इस पर बात करते हैं दैट दिस इज गोइंग टू बी 20 a movement of 20th century literature? Why? So just understand that what are the characteristics of modern. Generally, when we think modern, we think of newness, we think of growth, we think of changes both physically and mentally. So when we see that in the time of Chaucer, in the time of Shakespeare, in the time of 17th century, 18th century, the growth and change speed, the pace of growth and change was not so fast.
ठीक है, जो इसका ग्रोथ और चेंज था इतना फास्ट नहीं था, रिमेंबर दिस पॉइंट. बट in 20th century, or we can say that by the 20th century, the pace of the growth becomes too fast, because there was industrialization in the 18th century, there was the development of science in the 18th century, and thereafter in 19th and 20th century. ओके, तो जैसे जैसे साइंस ने डेवलप किया, सिटीज का डेवलप हुआ, देन things become more and more modern. The pace of change become so high. Actually, modernism is also associated to the cities, to the urban generation, urban people, because they are considered more modern. Why? They are considered more modern because they are new. They are with new thoughts. Then the another question is here. Then if the movement modernism is, then why post? What is postmodernism? Postmodernism is also the second phase of modernism, or we can say that the next part, means where things are beyond modernism, things become, we can say in one sense that worse, or we can say that advance in other sense from modernism. ठीक है, जहां पर चीजें मॉडर्निज्म से ज्यादा एडवांस हो जाती हैं, ज्यादा डिफरेंट हो जाती हैं, या फिर हम लोग कहें कि कंडीशन वर्स हो जाती है, दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म. क्लियर? So modernism and postmodernism both flourished in 20th century. So remember this point. ठीक है, 20th सेंचुरी में दोनों का फ्लॉरिशमेंट होता है. नाउ कम टू द टाइम, व्हाट time is decided for these two movements by the critics and theorists. So remember this point that there is controversy and there is discussion over the time period, but simply the time of modernism is considered from 1890s to 1930s or 35th. Okay, means till the Second World War, and postmodernism is considered as the in the time of post World War world. So some critics says that this modernism begins in 1890s. Some says that in 1901, after the Boer War and after the end of the Victorian age, and some other says that modernism begin in 1910, like Virginia Woolf. Virginia Woolf suggested that modernism begins in 1910. ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वर्जीनिया वुल्फ के अकॉर्डिंग जो है चीजें का क्या हो गई 1910. बट फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू जो चीजें हैं वो थोड़ा सा और भी डिफरेंट हैं. मींस सबके अपने अपने व्यूज हैं, वो उस तरीके से चीजों को देखते हैं. बट पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो मोस्ट ऑफ क्रिटिक्स एंड थियरिस्ट accept postmodernism's beginning after post World War or from the time of World War II. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम से या फिर उसके बाद का जो टाइम है उसको पोस्ट मॉडर्निज्म में कंसीडर करते हैं. Then now understand what are the characteristics of modernism and postmodernism and what happened in these two movements. Okay, so they started talking over things like fragmentations. Just if you see the paintings of Pablo Picasso, then you will find that there is fragmentation in the world, and there is drastic changes in science. There was infrastructural change, there was development in the cities, in the number of cities were developed in the world. देखिए एक बात आपको
विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि these two movements are other anything else. That is, we must understand the time and the space of Western world, not of India, because these theories were developed in the time and the space of Western world. ओके, सो ये जो कुछ चीजें हैं कहाँ पर डेवलप हुई, वेस्टर्न वर्ल्ड में डेवलप हुई, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब है इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, जर्मनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनका कंटेक्स्ट लेकर के चलिए, दीज मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म was not developed at that time in the reference of India, because we are moving towards postmodernism today in India. We were moving towards modernism, I think, after freedom, after few years after freedom. Okay, then this is not in reference with India, but this is in reference with England and other nearby countries of the western world. ठीक है, जो पश्चिमी संसार है, पश्चिमी दुनिया है, वहां के रेफरेंस के साथ आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि वहां पर किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए, एक जो बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो रहा था दुनिया में, वो ये था कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, and apart from that there was change in number of cities, number of new cities were developed, and the population living in the cities increased too much. जो उस टाइम पर सिटीज में रहने वाले लोगों की जनसंख्या थी, दैट विल इंक्रीज्ड। और इसके साथ साथ क्या हुआ, न्यू things, new thoughts came, science was developed, and several religious theories were changed and challenged also. ठीक है, जो religious theories थी उनको चेंज किया गया, उनको चैलेंज किया गया। ठीक, उसी टाइम में इन द टाइम ऑफ क्वीन विक्टोरिया, वहां पर एक जो वर्क लिखा जाता है, बाई बात करें तो ये तो वैसे मॉडर्निज्म से पहले का वर्क है, बट दिस इज आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और की रोल इन the development of modernism and postmodern, that is work of Darwin and Darwinian theory that rejects science। ठीक है, जो कि साइंस को रिजेक्ट कर देता है, तो वहां से जो है एक जो चेंजेस हैं वो बिगिन होता है। ठीक है, तो जब वहां से आप इस चीज को समझेंगे, देन आप इसके मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा जो सिस्टम बनता है उसको हम लोग समझते हैं। अच्छा, मॉडर्निज्म लिटरेचर में कैसे आया, लिटरेचर में आप स्पेशली देखिए इन द टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट पार्ट है, वहां पर आप देखेंगे तो जो कुछ नए नए वर्क्स आए, उनकी जो तरीके थे, उनकी जो स्टडी थी, उनकी जो लर्निंग थी, वो डिफरेंट थी। कैसे, द ईयर 1922, 3 or 4 works published, and these are very important. First one is T.S. Eliot's Wasteland, and thereafter Ulysses, and Mrs. Dalway in the form of short story. Okay, so all these were in a very different manner, and especially does not deals with outer world of human being, but deals with the internal psyche of the human being. ये किससे बिलोंग करती हैं, ये इंटरनल साइकी से, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ सिगमंड फ्राइड्स थियरी। ठीक है, तो यहां पर सिगमंड फ्राइड की थियरी का डेवलपमेंट होता है, और उसी का एक रिजल्ट निकलता है, दैट इज कि लिटरेचर में और आर्ट में उस वर्ड की स्टडी की, उस वर्ड के प्रेजेंटेशन की बात आती है जो हिडन है, जो इनर है, इनर वर्ड है, साइकोलॉजिकल वर्ड है, साइकी का वर्ड है। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो प्रेजेंट नहीं है, जो पास्ट है। क्लियर, तो यहां से बात बनती है। देयर आफ्टर
the World War First began and it was followed by the World War Second, and World War Second develops lot of chaos, and people were too much fragmented and things changed. ठीक है, और इसी के बाद जो चीजें डेवलप होती हैं, जस्ट लाइक जो हम लोग थियरीज पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहें कि थियरीज ऑफ लिटरेचर आर बेस्ड ऑन आइडियाज, मींस जो 4 पिलर्स हमने बताए थे कि 4 तरीके की थियरी हो सकती है। ठीक है, एक राइटर बेस्ड, रीडर रिस्पॉन्स, एंड टेक्स्ट बेस्ड एंड आइडिया बेस्ड। तो टेक्स्ट बेस्ड क्या था? स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। रीडर बेस्ड क्या? रीडर रिस्पॉन्स। राइटर बेस्ड क्या था? बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, और जो बाद में आइडिया बेस्ड है, आइडिया बेस्ड का मतलब है जैसे साइको एनालिसिस है, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म है, जैसे फेमिनिज्म है, जैसे जेंडर स्टडीज है। ये जो चीजें डेवलप हुई ये आइडिया बेस्ड थी, और ये आइडिया बेस्ड जितने भी डेवलपमेंट आते हैं, ऑल दीज आर पोस्ट मॉडर्न इन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक डिस्क्रिप्शन समझिएगा कि इसमें क्या चीजें हो रही हैं। मॉडर्निज्म क्यों 20th सेंचुरी में इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कि मॉडर्निज्म इसलिए कि यहाँ पर जो चेंजेस थे वो ज्यादा एविडेंट होगा। अच्छा, एक चेंज और हुआ था, वो एक चेंज क्या था विशेष? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सुएज कैनाल का निर्माण हुआ, मूवमेंट लोगों का बढ़ गया, कम टाइम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जा सकते थे। तो इन सब का असर क्या हुआ? पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड अदर थिंग दैट कि जो कोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, उनकी जनरेशन, उनकी जो पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन को क्या किया गया? वेस्ट में भेज दिया गया एज slaves, as workers। ठीक है, because they need labors for their industries। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज के लिए लेबर चाहते थे, इसलिए उनको वहां भेज दिया गया, ठीक, इंक्लूडिंग इंडिया। एंड दीज कंट्रीज बिकम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर देयर इंडस्ट्रीज, एंड a source of new knowledge, a source of advancement, a source of न्यू सर्चेस। ठीक है, तो नए जो एडवेंचर्स हैं, नई जो सर्चेस हैं, उनका एक प्लेस बनेगी, साथ ही साथ एक जो रॉ मटेरियल का सोर्स बने, जो है लेबर का सोर्स बने, और साथ ही साथ ये क्या बने? ये बहुत बड़ा मार्केट भी बने। और ये जो सारी चीजें थी ये बहुत ही स्पीड के साथ हो रही, तो जो चेंज की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। मीन्स जहां पर इंग्लैंड से इंडिया पहुंचने में महीने भर का टाइम लगता था, द सेम डिस्टेंस वाज नाउ कवर्ड, आई थिंक लगभग 10 से 15 दिन कम टाइम में कवर कर ली जाती थी। मींस स्पीड वाज इंक्रीज्ड, रेलवेज वाज डेवलप्ड। ठीक है, रेलवे के डेवलप होने में मास पॉपुलेशन को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया जा सकता था। जो गुड्स हैं उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत इजीली और कम टाइम में मूव किया जा सकता था। तो इन सब के जो चेंजेस आए, और इन सब का जो फिजिकल चेंजेस हम लोग कहें, तो फिजिकल चेंजेस का जो असर था वो साइकिक चेंजेस पर पड़ा। मतलब मेंटली जो हमारी थिंकिंग थी, जो हमारी मीन्स की ह्यूमन बीइंग की जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई। ठीक है, और उसका चेंज होना किसकी तरफ बढ़ता गया? पोस्ट मॉडर्निज्म। आज जरा सा आप देखिए, आप एक्सप्रेशनिज्म की कल्पना करते हैं, आप जो है एब्सर्डिटी की कल्पना करते हैं, आप मीनिंग इन मीनिंगलेसनेस की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द साइंस ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो ये मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के साइंस है। यहाँ पर जो है एब्सर्डिटी में मीनिंग है, मीन्स जस्ट यू कैन सी नाउ मॉडर्निटी इन टुडेज Indian cities also, that they are finding some
fashion in uh, rough things, in so-called bloody things, are meaningless things, just like damaged genes. Damaged genes is the result of modernism and postmodernism. Okay, absurdity is the result of uh, modernism and postmodernism. Why absurdity is postmodern? Because we don't think earlier about meaning in meaninglessness. We don't find any meaning in absurdity earlier, but now we find it existentialist. Why? They are finding difference in doing such things. They are finding existent. Okay, so these only simple discussion of modernism and postmodernism. Just we have to understand these two notions, these two ideas. First thing, next, most of theories will be postmodern theories. That is, and the first theory that will be take up is psychoanalytic criticism. Psychoanalytic criticism is very important, and it was developed by the books and works of Sigmund Freud, who was actually a doctor, a physician, and a psychoanalyst. Means he was a mental doctor, and he worked on several mental diseases and gave his new theory. So we'll continue this psychoanalytic criticism in next few lectures, and this is long theory and will take some times. Okay, so we'll meet again in the next lecture. Thank you.